welcome back to my channel Jagriticreates. Hope you all are doing very good and I'm so glad if you're watching this. I'm gonna be doing oil painting today. This is something new for me. Actually, this is the second time I'm making something in oil paint. This is my first oil painting which turned out to be pretty good. I really like painting with the oil color but मेरे को इसके बारे में actually ज़्यादा पता नहीं है. So if you're a beginner, this might be the best video for you because I'm also a beginner. So I'm gonna be painting a big Indian bull here. तो यहाँ पे मैंने acrylic color से पहले this is a canvas board. पहले मैंने इसको पूरा black कर लिया है. Then I'll be using these small tubes. ये मैंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के लिए सस्ते वाले जो होते हैं ना 12 कलर वाला पैक. आई बॉट दीज फ्रॉम Amazon. ये कैमल के कलर हैं और इसके साथ आपको चाहिए अ फ्यू ब्रशेस. मैंने ज़्यादा ब्रशेस लिए नहीं हैं. I'll mention these on the description box, the colors and the brushes I'm using. And you also need the turpentine oil. ऑयल पेंट के साथ आपको ब्रशेस वॉश करने के लिए एंड कलर को वेट करने के लिए you need turpentine oil. That's all you need. That's it. So let's just go and start painting. तो एज यू कैन सी मैंने जो है पहले बुल का जो ग्रे कलर है जो बॉडी का बेस कलर है उससे स्टार्ट किया है और अभी मैं ईयर्स करना है मुझे एंड देन उसके बाद इसके ऊपर जो कलरफुल क्लोथ्स और एक्सेसरीज हैं आई विल बी ड्राइंग दैट.
ओके ओके ओके, मेरा व्हाइट कलर कहाँ है? लुद्धू जी ने फेंक दिया है कहीं। कहाँ पे? तो दिस इज माई डे 2 एंड जो आप देख सकते हो दिस ग्रे एरिया इज प्रिटी मच डन। अब मुझे क्या करना है, एक्सेसरीज पे मूव करना है। यहाँ पे दिस कैनवस इज एक्चुअली वेरी स्मॉल, तो मैंने ना बहुत छोटा सा ब्रश लिया हुआ है, 4 नंबर का ब्रश है, तो मैं इसी से अभी पेंट करने वाली हूँ। ज़्यादा मैं ब्रशेज यूज नहीं करने वाली हूँ इसमें। आई एम गोना बी डूइंग द फैब्रिक हेयर। बुल के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ है, मल्टी कलर कपड़ा, आई एम गोना बी डूइंग दैट। और उसके बाद गले में जो घंटियाँ होती हैं, एक्सेसरीज, सजा धजा सा बुल है मेरा, तो आई एम गोना बी डूइंग द एक्सेसरीज। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू। ओके सो मेरा 50% काम जो हो गया है, नाउ दैट इज डन एंड नाउ आई एम गोना टेक अ ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद जब मैं आती हूँ तो आई एम एबल टू सी सम न्यू मिस्टेक्स जो अभी मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, बिकॉज मैं उसको काफ़ी देर से देख रही हूँ.
तो जब मैं ब्रेक के बाद आती हूँ आई गेट अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, तो मैं गेट फ्रेश एनर्जी एंड आई एम एबल टू फिक्स दोज मिस्टेक विच आई एम नॉट एबल टू सी राइट नाउ. सो मैं जा रही हूँ ब्रेक पे और आप देखो मेरे बच्चे की क्लिप्स. आई हैव रिसीव सम ब्यूटिफुल गिफ्ट्स और फ्रॉम किक्स एंड ट्रॉल्स, तो यू जस्ट सी द क्लिप्स हाउ इट्स गोइंग विद माय लिटिल वन. ओके, तो मेरी पेंटिंग ऑलमोस्ट इट्स ऑन द फिनिशिंग स्टेज. अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं बैकग्राउंड के साथ आई एम गोना बी मर्जिंग माय फ्रंट ऑब्जेक्ट. तो मैं ब्लैक कलर लेके मिक्स कर रही हूँ.
So I'm gonna be adding cherry on top of the cake. मैं बस कुछ यहाँ पे I'll be adding some pom-poms. This is done. ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई है. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon too. And if you like this video, please give me a thumbs up. Bye bye.